Let me know in between if you face any network connectivity issues or something, or you are not able to hear me. Okay. So yeah, good morning everyone. So in the today's session, we will talk about the core part of the DevOps and then why we need to learn the DevOps. What is your purpose to learn the DevOps? Okay. This should not be only just to earn the money. Okay. If you're just looking for only earning the money, then there might be some wrong prescription. Definitely we need money to survive or other stuff for the life, luxurious life or something. But apart from that, there should be some passion, because if you see the whole market about the IT industry, okay, we are not talking about the government job. If you hired in the government job, definitely for the lifelong you might be working for the similar task, right, regularly. But in the IT industry, doesn't matter you are developer, you are DevOps, you are cloud engineer, or any sectors, right? So we have to keep ourselves updated. If you not keep updated yourself, you have seen the situation of the Nokia or any other devices available in the market, right? If they're not updated up to the market, then they will be collapse there. So same thing, if you are seeing now, before, let's say before 10 years, right? So before 10 years, what we have there is a good opportunity about the Linux administrator, database administrator, or something more positions or more scope on the definitely technical supports as well till now. But there is a more scope in the Linux administrator. But now the position gradually rolling out, and now if you see in the market, you will see lots of opening for the cloud engineer, DevOps engineer, or SRE or something, right? So there might be opportunity for the Linux administrator, but not at the market like what we have seen before 10 years, right? So time to time we need to update ourselves. So that is the reason we need to keep in ourselves in mind. So just if I learn only cloud, any cloud like Azure, GCP, Azure, or AWS, then my job will be done. Okay, so not that in the case. We need to keep updated ourselves, and if you following the properly on the any cloud website or something, every week or monthly they gradually upgrade their system like UI base or any features or any service or any other options. So that is the things we need to keep out in our mind, and we need to keep ourselves updated. Okay, and we can try to update ourselves maybe within a like 2 months, 3 months, or uh, 3 months span. Now you are learning about the DevOps, for example. So let's say tomorrow there might be new tools come in the DevOps. Okay, DevOps is not a particular tool. Okay, it's a set of tools where company implement or DevOps culture like methodology just to easy the regular jobs, right? So let me just open the in between. If you have any questions, you can definitely just ask me, because if you are not able to clear your doubts, then it will be happen in your mind. You will not going forward. So I would maybe ask some questions to you before the this is just a demo class for today. So from the next Saturday we will be start full fledged. So before jumping into the our normal syllabus I want to expose today. So before that I want to ask some questions. You whatever, if you are able to answer, just give me. So first question will be like, why you are learning DevOps? Do you have any mindset or any prescription in your mind why you choose DevOps? You just influence from your friend circle, or you want to earn more money as DevOps guys will have more income, right? The salary or package something. So do you have any certain mindset why you are jumping into the DevOps career? Can anyone answer? Whatever there might be, whatever it can be answered, just you can just try to speak. What thoughts in your mind? If you are just looking for opportunity कि ज़्यादा openings वगैरह आते हैं इसमें, then you will get good lifestyle package like that, ऐसा कुछ है? डिसाइड करने के पीछे कुछ तो फैक्टर होगा ना, कि व्हाई यू आर डिसाइडिंग यू आर लैंडिंग इनटू द डेवऑप्स करियर? जो भी है आप बताओ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट थॉट प्रोसेस यू हैव. इट कैन बी सिली आंसर्स, डोंट वरी.
but try to speak up. Yeah, there are several reasons to that. Uh, the first one is obviously the money, Mm-hmm. and like I have been working since like 8 years experience now, and the night shift. Mm-hmm. Yes. Okay. Any Oh, well, others? yeah, Mm-hmm. according to me, obviously, I'm looking for high salary. Mm-hmm. Also, I want to enhance my technical skills and Mm-hmm. professional growth. So these are the reason that I'm looking for the jobs. Okay, good. Mayur, Praveen. Uh, I think I have joined this to learn more new things. Mm-hmm. Uh, as per my current job, I need these things to learn so I can grow in my current job also. Okay. Praveen, since you are just doing the BCA, so do you have any thought process? किसी ने बताया आपको कि ये DevOps कर लो, इसमें अच्छा स्कोप है, ऐसा कुछ है? Your voice is not audible. Not yet. Hello. Yeah, yeah. Yeah, I'm audible to you, sir. Yes, yes, audible. Yeah, someone suggest me they observe very best. Mm-hmm. Okay. And Sapna, Sonali. My current job, I need to learn AWS, so that's why I joined. Mm-hmm. Okay. Yeah, the reason I'm asking to you guys because I want to understand because DevOps is not a single straightforward tool. This is a complete environment culture. Okay. So there are multiple things involved in this DevOps. Okay. You need to learn the infrastructure as a code, CI/CD pipeline, then Kubernetes containerization, cloud. It can be anything like GCP, your Azure or AWS. Okay. And then there are lots of things like some people can learn the Python scripting or Node.js or TypeScript something. It depends on your skill set. If you have a little bit background on the development side, so you can quickly grasp those scripting. But that doesn't mean ki, you should have only the background, but you can also learn some sort of Python scripting there. So definitely nowadays we have a chat GPT, which is very good assistant. You can easily learn or find out the any script. Okay, at least it's not 100% sure like he will give exact answer, but if you put the proper prompting there, prompting is one of the major factor in the AI. If you are putting the proper prompting there, you will get proper answer. Okay, I will definitely teach you in the live classes because I am regularly using that. I'm based on that I learn the infrastructure as a code, which is CDK. Okay, similar to Terraform. Then yeah, that mindset you should have. You need to work on the multiple tools. ऐसा नहीं है कि जस्ट एक टूल सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा, नहीं. देर आर मल्टीपल टूल्स यू नीड टू लर्न. ओके, सो दैट माइंडसेट यू शुड हैव. ठीक है, डेफिनेटली वी आर हियर टू अर्न द मनी. एंड if you have a proper skill, communication skill and a technical skill, and the major one is like जो हम बोलते हैं ना नॉर्मल की बोल बच्चन चाहिए, but हाँ, that's because we need sometimes we are working on the global factor, so we need to face client interaction there. Definitely sometimes some might get opportunity to directly face to the client. Sometimes we mostly work with the chart basis, right? And we need to attend a multi-level team environment, right? To client communication, multi-team communication to resolve any issues or debug or something like that. So that is the reason two skill you should have or you can try to improve, like communication and then your technical skill. Okay. And next question would be like, do you have any roadmap to learn DevOps or just try to get? So definitely you are here to learn the roadmap, definitely, and I will definitely guide you the right path. But before jumping into this session, so do you have any mindset like कि DevOps में do you explore any tools कि किसमें क्या क्या रहता है DevOps tool में? Anyone explore something? क्योंकि the reason is why I'm asking this.
So before setting any role, any goals in the life, so definitely sometimes we are not sure कि हमें क्या path follow करना है, right? Which path we need to follow. But sometimes क्या होता है, it depends on candidate to candidate. Sometimes some candidate might be explore something like to achieve this DevOps. For example, we are talking about the DevOps. So ये tools हमें सीखना पड़ेगा. So anyone tried to explore this कि क्या effort लग सकता है इसमें और कितना prepare है हम इसके लिए? Yes, sir. Firstly, we need a basic computer knowledge like networking, हम्म operating system. हम्म Uh, After that, we will learn in AWS. It will be very easy if we have a basic knowledge. हम्म Yes, definitely. The fundamentals, definitely, I have just prepared that yesterday. I will definitely show you. But before landing into the DevOps as a career, if you are completely freshers or अभी क्या होता है ना नॉर्मली इफ यू सी इन द मार्केट, सो जो आर्ट्स कॉमर्स कैंडिडेट है वो भी दे आर ट्राइंग टू जंप इनटू द आईटी करियर. अभी जो द कैंडिडेट हु डजंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हु डजंट नो आईपी एड्रेस क्या है, द नेटवर्किंग सिस्टम क्या है, even हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हाउ इट वर्क्स, so they are also trying to jump into the DevOps as a career. See, I am not saying कि they cannot survive or something, but you have to explore something yourself as well. आप दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, so no one can give you spoon feeding, right? This is the hard truth. So sometimes you need to give yourself some times कि वहाँ पे ये जो एक्सप्लोरेशन है, जस्ट किसी ने इन्फ्लुएंस किया कि अच्छा मार्केट है, अच्छा जॉब मिलता, जॉब है उसमें करियर है, पैसा मिलता है, बट यू हैव टू गेस योर कैपेसिटी एज वेल. अभी अगर किसी ने बोल दिया कि डेवलपर अच्छा है, फुल स्टैक डेवलपर वगैरह, बट यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज और बैकग्राउंड ऑफ द प्रोग्रामिंग नॉलेज, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड सेट कि मुझे कोडिंग सीखना पड़ेगा, उसको उसके लिए जो भी एफर्ट्स है आई हैव टू पुट, राइट? ऐसे नहीं कि दो चार लाइन का कोड लिख दिया आपका काम हो जाएगा, आपने करियर सेट कर लिया. डेफिनेटली नॉट. So there can be multiple things involved in this process. If you are become a cloud engineer, DevOps engineer, or any developers, okay? Even if you try to become a database developer as well. So that's things. Okay. So definitely we should have a basic fundamentals to grab into this opportunity. Then, okay. So now I can share my screen so I can go one by one. So you can just aware. So don't worry. Whenever you get any questions, just ask me so I can just guide you on that. So that is the reason I'm just here. Let me share the screen. And one more thing, when we are trying to dealing with the multiple tools and technology, we need to prepare our mindset like we should have some patience, okay? And we should also have some ability, or what we can say, efforts. We need to put some efforts to learn something new in the market if you want to get good opportunity or good salary, as you have said, right? Because if you want to earn 10 lakh or 20 lakh per annum, so company ऐसे ही नहीं दे देती ना आपके skills और जो भी है. Sometimes क्या होता है ना, if any candidates a little less knowledge on technical side but good in the communication side, so that also additional advantage. Having the good communication, that also matters, okay, in the IT industry. I hope you are able to see my screen. Yes. Okay. Yes. So definitely I will share this link to you, or you can just find out on my GitHub profile. Let me paste in the chat. Okay. So in this repository, you will find about the DevOps. As also you can see the market जो trend अभी चल रहा है, जो if you see a, just try to search DevOps openings on the any job portal like Naukri.com or any Indeed or even LinkedIn. Also you can just use that. Okay. You will see most of the things are coming from the DevOps SRE part. Okay. And the tools is available. Definitely we will talk about that. So for this batch,
if you are aware like how much this. So total duration might be 3 months. Minimum we can consider 2.5 months. But if because of any reason or any medical issues, we can extend it. Okay. Then batch, how we commitment this batch, like definitely we will start with the theoretical part, then hands-on practicals, that's we are focusing more. And after the batch, I will give you some complementary, as I said, which I covered last time, real-time project videos and the notes as well. So definitely we will try to build 2 3 projects there, which is involve completely your GitOps, your DevSecOps or other things which you are heard from the market. Okay, to configure the end-to-end CI/CD pipeline by using all the technologies. So I will give you that video access as well. So after the session, you can just send me your email address and your name. Then this batch will be the online, and batch will start today the demo session. So from the next week Saturday onwards, we will start with the full fledged. Okay. Saturday, Sunday morning 9 a.m. to 11 a.m. batch timing. Language will be English, but sometimes you can use in between Hindi if you have any concern over there. Fees will be this is my regular fees. Okay, but sometime I just open for the charity as well based on the candidate financial conditions. Then this is the official website which where you can just, if anyone want, like they don't have time to attend the live batch, then they can purchase the recorded session course from here. Okay, there it has a DevOps real-time project, then your DevOps entry preparation as well. So the candidate from my batch, I will give you this free of cost, and the DevOps course as well, and the AWS for separately. Then these are the YouTube channel, which I hope you might aware already. And now course objective is we will definitely follow the DevOps practices which really required nowadays. Okay. SRE, if you worried about the what exactly involved in the SRE, so that's just might be word coming new in the new trending area, but like the person who are handling the alerts or if any issues coming there, try to resolve. Then if they are not able to resolve, then he might reach out to the L2 person or L3, whatever the senior person available there. Okay. And some other principles are there, so we will definitely talk about that. Then solve real-time challenges. Then when we talk about the real-time challenges, when you try to work on the any big organization, so you might get very less opportunity to create any infrastructure from the scratch. Okay, so there might be maximum chances you need to work for the existing project, which might be already set up by some of the your existing person or a client side person. Okay, if you get any opportunity to create complete project from the scratch, then really good opportunity, but that will comes very less. Okay, when we talk about the big organization, if you are working in the small industry, so definitely you will get or maximum chances to set up any project from the scratch, and where you definitely learn lot of things. Then we need to learn like how we can implement the concept like GitOps, then DevSecOps, monitoring and troubleshooting techniques. Okay, monitoring might be yours related to CI/CD pipeline, any failures related to service not running or pod after deployment pod not coming up. Okay, there might be multiple issues or different scenarios, situations. Okay, that we will try to cover in the live batch. Then prerequisites, as we discussed about earlier. Okay, we should have basic understanding about the operating system. Okay, so when just we need to prepare here mindset. So now normally on the client machine, like we regularly use our laptop, desktop, okay, as a end user, we mostly use Windows machine. Okay, we know how to install the packages. Just double click on the exe file, and it will be by clicking next and just something like that. We can easily graphical format we can easily install. But when we talk about this DevOps model or any containerization or any CI/CD pipeline, we should aware about the specifically Linux. This is completely command line interface OS. Okay, you will not get opportunity to work on the graphical interface here. Completely command line interface. If you already working have knowledge on this, you might consider or aware about this how we can use. Okay, but you need to completely work on the command line. So definitely we will cover that. Then as a basic
fundamentals like you should have knowledge about the familiar with networking concept like IP address क्या है, DNS protocols क्या होते हैं, HTTP, HTTPS, FTP or other mail servers or something like that, and the firewalls क्या है, at least basic understanding कि what is the terminology of these things, what is the use of IP address, DNS, HTTP, HTTPS, firewalls, right? What at least if you search like single word like or what is firewall for example, so at least 2 3 lines we can get the answer like firewall करता क्या है, right? So at least if you have a basic understanding, so going forward you will get more concept clear. नहीं तो अगर आप बेसिक में ही पढ़े रहोगे, सिंस मैं आई हैव एक्सपीरियंस इन द लास्ट बैच, एक बंदा नॉन आईटी बैकग्राउंड से आया था, वो आईपी में ही कंफ्यूज था मोस्टली कि आईपी है क्या, ठीक है? तो ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, ठीक है? एंड जस्ट नॉर्मली भी सर्च करोगे तो आपको यू विल गेट द आइडिया कि ये चीज़ें है क्या और करती क्या है, ठीक है? देन बेसिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, वर्चुअलाइजेशन क्या है, डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड वी विल लर्न दैट, बट वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, या फिर फिजिकल मशीन डेडिकेटेड सर्वर जो होते हैं डेटा सेंटर में, वो होता क्या है, नॉर्मल भी आप सर्च करोगे। Okay, sorry, there is a network glitch. I'm audible now? Yes. Yes. Okay. Then as we discussed about the soft skills, because we need to collaborate with the multiple team. Okay, there is a database team, security team, client side DevOps team or platform team or multiple teams involved, QA, your tester or whatever. Okay, so that for that we need to improve ourselves as a written and verbal communication. Okay, that will definitely help in this during the management of the project. कुछ client तो ऐसे होते हैं, we are also facing really कुछ क्लाइंट का कम्युनिकेशन या हम क्या बोलते हैं उसको, एंसेंट ऐसे होते हैं ना, समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है सामने से, ठीक है? तो दैट वी नीड टू वेरी फोकस ऑन दैट कि जो इंडियन ट्यूनिंग है दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, बट जो फॉरेनर क्लाइंट होते हैं ना, इट कैन बी even US client also good in terms of the communication or font ancient wise, but sometimes Japanese or any other countries there is some no थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, that we need to focus on that, but it's rarely we can just face those kind of clients, but normally we can understand, but written and verbal communication should be there. Okay, and how we can write down the any mail or something, so you can use chat gpt as well, so that also we will learn. So the grammatical mistakes or any formatting that we can easily understand there, how we can write. So if I can show you quickly demo, like let's say, or I can show you yesterday's one of my chart. See, Praveen, you regarding your right, yesterday you are facing the some issue related to your AWS account billing. So I use chat gpt here and you can see how prompt I use. Okay, so there is issue with the AWS billing. Praveen doesn't aware how to use and how the cost working in the AWS side. Okay, he just tried to launch the EC2 instance and forget to delete it. Okay, so he got some charges there, $11 or something. Okay, so we need to write down the mail with the proper professional language to the AWS team. Like I am the student and I am not really aware about the how to tackle with this billing part. I am and how to basically understanding problem of the how billing works. So he is asking like how we can get the credits for this, and for that I just write down the prompt like I got 700 Indian rupees something. It will suddenly bill and I'm not aware about the billing. I'm just a student and exploring options. I need a credit and nil this bill. So in this of nil, you can just add the word like adjust the bill to explore more options. Next time I will take care of my billing and
what prompt I'm using here on the below, write this best suitable message to AWS team and apologize this and ask for credit. Okay. So in this case, if you put this is one of the example how you can use ChatGPT efficiently. Okay. If you put the proper message to the ChatGPT, he can guide you proper with the written communication and with the proper professional language. You don't need to worry about the grammatical mistakes or something. If you have expertise of the written communication, that also good. But you can see he write the proper message for what we have put in the prompt here. Okay, so we don't need to worry about the language or something. He mentioned about that, and you can just use that. So same thing you can use tricks to your regular life when you are dealing with the clients or any written communication or writing any message mails or the multi-team coordination or something like that. So you can use different way. Nowadays we have multiple options. Okay, then patience and adaptability to work under pressure and deadline works. Okay, so there might be a situation in things like you need to be patience. You don't need to be hype or something like कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, how I can do this, और ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है ना, लाइक वहाँ पे जब हम काम करते हैं प्रोजेक्ट में कि हो सकता है कि न्यू टूल्स आ जाए वहाँ पे, देन यू डेफिनेटली नॉट अवेयर कि ये टूल कैसे काम करता है, राइट? So in that case, don't panic there. Just try to understand how the terminology works for that tools. Okay. And then sometimes we also have situation like we need to work under the pressure and meet the deadline work. There might be very cases there when we are working with the multiple projects. Okay. So that we need to plan properly. Analytical skills to resolve any issues for the infrastructure. Decision making skills also we need to, definitely sometimes we don't have these skills, but time to time or after some gradually some period, so we definitely learn this when we have a real time experience and the multi team coordination. So sometimes हम खुद सीखते हैं, sometimes based on the other experience, right? So that we can just adapt gradually, and for that we need to keep our mind open. Okay, now the tools which we are trying to cover and which is in the trend now. So for the version control we will definitely learn Git concept, GitHub and GitLab क्या है, right? In that GitHub and GitLab, we have a CI/CD pipeline. We can the option feature is we can use that as well. You can see if you search CI/CD pipeline tools, you will see you will find a lot of tools are there. CI/CD Jenkins, it's open source. GitHub Action, GitLab CI/CD. Okay. Infrastructure as a code. Before DevOps involved, maybe you can say like 10 years or 15 years before. So people normally what will happen कि जब भी हमें एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना होता है या जो भी सर्वर डिप्लॉय करना है, तो वी यूज मैनुअल मेथड देयर, लाइक एनीवन अवेयर अबाउट द एफटीपी क्लाइंट सर्वर? सो अगर कुछ आपको फाइल्स वगैरह Yes. डिप्लॉय करना है सर्वर पे, तो वी यूज एफटीपी क्लाइंट टू कनेक्ट आवर सर्वर बाय एसएसएच एंड देन यूज अपलोड दैट फाइल्स और डाउनलोड जो भी करना है आपको, ठीक है? But nowadays, when you working with the enterprise organization, you will no one allowed you to create any AWS resources manually or deploy your applications manually. Okay, you have to follow infrastructure as a code and your CI/CD pipeline. आपको नहीं आता मतलब हमें नहीं आता, वो हमारा प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब वो हम अगर इमोशनल होकर चले गए कि मुझे नहीं आता मैं क्या करूँ, कैंसिल सो मुझे कंसोल से अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा लगता है, कंपनी को नहीं, ठीक है? सो दैट इज द रीजन वी नीड टू डिजाइन आवर माइंडसेट दैट वे कि हमें ये कोडिंग से ही करना है, ठीक है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है, सो दैट वी नीड टू डू फ्रॉम द आईएससी को जो भी टूल्स अवेलेबल है, मोस्टली अभी जो मार्केट लीडर है विच इज अ टेराफॉर्म, ठीक है? उसके बाद जो भी डिपेंड करता है किसी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड कंपनी, समटाइम्स पीपल प्रोजेक्ट यूज सीडीके और क्लाउड फॉर्मेशन, और मोस्टली आपको ज़्यादा से मिलेगा टेराफॉर्म, ठीक है? सो दैट वी नीड टू फोकस ऑन टेराफॉर्म इन दिस बैच. Then containerization, you already aware about the Docker and Kubernetes, right? Then this is the package manager of help. Then in the SRE or observability, we can say is CloudWatch and Grafana. Sometimes people use Prometheus or any जो भी tools है, lots of tools are available in the market, ठीक है? Then when we talk about the DevSecOps, it's coming in like a code quality checks, static code analysis वगैरह, and Docker image scanning. So उसमें बहुत सारे tools आते हैं, but these are the major one which people use. SonarQube, okay, and TV. Cloud providers, you can consider anything like if you
expertise. Like in this batch, we are trying to cover AWS, but sometimes people also follow the Azure or GCP something. But the market leader is AWS, then Azure. So this is the tentative syllabus of this. So there will be slightly change, not the major one, but I want to add more core level services as well here going forward. So that will be helpful in the long run. Okay, because that is in the trending now. If you see any profile for the DevOps, you will understand कि ये अभी need क्या है market में, company क्या need करती है, ठीक है. So that introduction part we will try to cover DevOps, what is the DevOps, then role of the DevOps and SRE, right? How they collaborate, DevOps lifecycle, SRE principles, why organization adopting the DevOps, right? And SDLC, which is the main part. So कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करना है, डिप्लॉय करना है, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट प्रोसेस चलता क्या है, ठीक है, कंपनी में उसकी प्लान, हाउ द प्लानिंग हैपन्स फॉर द एनी एप्लीकेशन डिजाइनिंग, how multiple team coordinates there, right? How we can manage our project in the version control system, which is the Git repo. Okay. Then how we do the deployment there from the CI/CD pipeline. What things do we after the stabilize the applications like monitoring health or like that, whatever things. Okay. ऐसा नहीं है कि हमने application design किया, planning की, deploy कर दिया, उसके बाद क्या? So that we need to monitoring, right? So that's completely we will try to understand in the SDLC. Then this is the as we talk about the Linux. Okay, so we'll try to cover this Linux foundation, why Linux, what is Linux, and then some of the commands there. Okay, and definitely we will try to cover some of the basic understanding of the shell scripting and the how it works, and we can try to write the some of the shell scripting over there. Okay, so shell scripting का इसमें अगर if you ask me like what kind of shell scripting we need to learn or write, so it's depend on कि operation company में आपको task क्या मिला है. समटाइम्स कुछ वैल्यू पास करके किसी और प्रोसेस में उसको इनपुट करना होता है, या फिर मान लो कि डेटाबेस का बैकअप लेना है या किसी पर्टिकुलर फोल्डर का बैकअप लेना है, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन कैन बी देयर. एटलीस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स क्या है उसमें, उसको कैसे पास करना है, राइट? और जो भी सेल स्क्रिप्टिंग के हिसाब से जो कमांड लाइन है वो हमें यूज करते आना चाहिए वहाँ पे. देन योर पैकेज मैनेजमेंट. Then in the module 3 we will try to learn Git version control system. So I just categorize separately the basic, advanced, and then about the GitLab, GitHub. Okay, these are the major tool which we need to learn anyhow. Okay, if you want to jump into the DevOps, this is the mandatory part. And based on my last 13 years, I added only the required things here. I am just trying to avoid any unnecessary things which really doesn't required. Okay, जो mainly अभी जो trending में है, क्योंकि हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. बट यू गाइस शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंडामेंटल्स एज वी डिस्कस, लाइक नेटवर्किंग, योर बेसिक OS अंडरस्टैंडिंग, कमांड लाइन इंटरफेस, दैट वी हैव टू फैमिलियर विद दैट. Okay, then some of the AWS services I added. So here I need to add some slight changes like related to security, which is a web application firewall. So that I just forget here, but I will just add. And this is not a fixed क्या बोलते हैं उसको syllabus कि in between when we go for the batch, so हो सकता है कि कुछ सर्विस वहाँ पे जो लगे मुझे कि ये भी सिखाना जरूरी है आपको, तो वो मैं फ्लो में वो भी आपको दिखा दूंगा वहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर द मेजर थिंग्स लाइक EC2 क्या है, देन लैम्बडा फंक्शन, API गेटवे, योर स्टोरेज सर्विसेज लाइक S3 bucket, networking service, your VPC, okay, your database service which is mandatory, DynamoDB, then your IAM service which also mandatory part, monitoring, okay, CloudWatch, CloudTrail, ISC. Within AWS we have a cloud formation, okay, because Terraform the third party tool hai. Within AWS we have a cloud formation there, okay, and CDK as well, which is designed by the AWS, okay. Currently I'm working on the CDK from last 2-3 years, okay. I also already created the playlist of the 10 videos on my YouTube channel. If you want to understand few in future, okay, right, not right now. Then container orchestration, like we can try to cover the ECS cluster, EKS cluster, and the ECR, okay, which is the really important nowadays. Then separate understanding of these containerization architecture, how to write down the Docker file, how to deploy
how to convert Docker file into the Docker image, how to push it to the repo registry, and then how we can deploy that, right, to our application, how to deploy the applications. Then for the container orchestration, how we can manage through the Kubernetes. In the Kubernetes, there are multiple components. We can try to understand the architecture there, dashboards, monitoring part, and then after the deployment, how we can monitor the pods. Okay. Then your CI/CD pipeline and Terraform, right? There are multiple things in the Terraform. Then you're in the GitOps, we can just try to use cover some of this flow branching strategy or something like that. Okay, and how we can just try to add the deployment part there. Then DevSecOps, we already discussed about the tools. Okay, about how we can implement or integrate the SonarQube and Trivi there, which is the Docker image scanning tool. Then some of the fundamentals of the SRE part, what is the SLA, SLOs. If you guys already working on the technical support, so you might definitely have this SLA, SLOs, right? The person who are working currently. Error budgets, incident response, then monitoring part we can use, try to cover Grafana and CloudWatch. In the earlier batch, I tried to learn, teach the Nagios, which earlier used, but nowadays mostly people are focusing on the Grafana and CloudWatch, and there are many tools, but we can just try to cover majorly on the Grafana and CloudWatch for the monitoring and logging point of view. Okay, then how we can building the dashboards, alerting. Then the additional part I'm just mentioning here, how we can manage the projects, like how we can maintain the Jira workflows, जो टिकट हम कोई भी टास्क हम क्रिएट करते हैं इन द रियल टाइम इंडस्ट्री. ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बता दिया, अपने सीनियर ने कि जस्ट ये टेराफॉर्म का फाइल लिख दे, इस RDS डिप्लॉय करना है. So don't go verbally. So we need to create a proper structurized Jira ticket there, and we need to move into the in progress. Then we will start working on that. Okay. So that's the part there. Then how we can write the documentation part. In the documentation can be related to your troubleshooting, related to your infrastructure documentation or any architecture diagram or something. Okay. So for that we can use Confluence there, and how we can design or have the sprint planning there in the industry. That also, um, sometimes company use waterfall model. If you just learn about the agile or methodology, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से लोग करते हैं ना, टूल्स सर्विसेज वगैरह, यू डोंट हैव टू डू एनी सर्टिफिकेशन ऑन दैट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अजाइल मेथोडोलॉजी वगैरह जो है ना, उसमें एवन लर्न करने की भी जरूरत नहीं. बाद में जब एवन यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट और एनी कंपनी, वहाँ पे इंटरनल डेफिनेटली ट्रेनिंग रहती है. अगर उसमें भी अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर लोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो जीरा टिकट वगैरह वहाँ पे पूरा सिखाया जाता है ना, सो यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज देयर कि एग्जैक्टली जीरा के अंदर भी क्या क्या है, क्योंकि जीरा के अंदर बहुत कुछ है कि वर्क फ्लोज है उसमें. जब हम वर्क क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है. ठीक है. And if anything missing, we can definitely add in the runtime, so don't worry about that. So this is what I designed for you. So any questions for you, for me? Any doubts in this complete? Might be not related to this, but any general questions you can just try to ask. क्वेश्चन कैसा भी रहा तो चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक अप. बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं कि चल क्या रहा है, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं है, कैसा है. फ्रेशर हुआ तो क्या हुआ, मतलब बाद में आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना उसमें. आपको थोड़ा सा टाइम और एफर्ट देने की जरूरत होती है यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं है. क्योंकि मल्टीपल टूल्स, अगर आपने देखा होगा कि अपनी मल्टीपल टूल्स और थिंग्स अवेलेबल है इसमें, इन्वॉल्व है. सो दैट टाइम बिंग एक, जो भी है, लेट्स से कि अभी फ्रेशर्स है तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो यू कैन जस्ट पुट योर सेल्फ फॉर 3 years और सॉरी 3 hours और 4 hours पर डे. और एक सेट आप गोल सेट कर लो कि आपको 2 या 3 महीने में आपको ये टेक्नोलॉजी लर्न करनी है. सो इन दैट केस प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और डाइजेस्ट भी हो जाएगा. ठीक है. एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवन?
And additionally, don't worry, I will give you that course access as well, which is interview preparation guidance. Okay, so which I covered for the last some candidates. So definitely I give you that as well. So sidely, if you have a time, so you can just try to learn those as well. Anyone any doubts? Praveen, Ashwin, Mayur, Sapna, Sonali. No, sir. Okay, तो कर लो कि हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। जस्ट डोंट ट्राई टू। अभी कैसे मार्केट में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चलता है अभी। लास्ट 2-3 साल हुआ थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी सिचुएशन जो है ना, कंपनीज ट्राइंग टू जस्ट एडजस्ट द बजट, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठा बोल के कुछ भी बोलूँ, बट वहाँ पे थोड़ा सा क्रंचेस है अभी मार्केट में। बट होप कि वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाए, जैसे जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कम होता है या मार्केट सिचुएशन इकोनॉमिकली स्टेबल होता है ना। ये तो चलता ही रहता है। इफ़ यू रिमेंबर 2008 में तो इससे भी सिचुएशन बैड हुई थी, राइट? इफ़ यू एवर नॉट अवेयर, डोंट वरी, बट आईटी में वहाँ पे बहुत बड़ा स्लैक हुआ था उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे वहाँ पे 2008 में। तो इट हैपन्स आईटी में, कुछ सर्टन पीरियड के बाद क्रंचेस आते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि भी क्या होता है ना, प्रेशर है हमें जॉब नहीं मिलेगा, इफ़ यू कंसिडर लाइक दैट, सो इट्स अ नेगेटिव थॉट। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रंचेस से बिजनेस अभी कंपनी क्या कर रही है, जो हायर पैकेज वाले हैं अगर उनसे ठीक से आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो दे विल थिंक कि अगर कोई उनको अच्छा कैंडिडेट मिल जाए जो कम बजट में काम करे और अच्छी स्किल सेट हो, ठीक है, या फिर मतलब कम्युनिकेशन वाइज या थोड़ा बहुत टेक्निकल कम है तो भी चलेगा, बट वो क्या करते हैं अंदर वो ट्रेनिंग देके उसको सिखा देते हैं। सो यू जस्ट ट्राई टू अक्वायर दोज ये अपॉर्चुनिटीज। अभी उसमें उसके लिए आप लिंक्डइन पे जाके जो भी अलग अलग मान लो कि हम डेवऑप्स में फॉलो करना चाहते हैं, राइट? सो जस्ट डेवऑप्स वाले जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इस पे लिंक्डइन पे, वहाँ पे जाके सर्च करके वहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग करने की कोशिश करना, वहाँ पे नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा खुद का, एचआरस वगैरह है उनसे कनेक्शन इंक्रीज करना, ठीक है। और जो भी आप डेली बेसिस पे लर्न करते हो वो भी आपको शोकेस करना पड़ेगा, दैट इज आईटी इंडस्ट्री का रूल। ठीक है, आप काम कर रहे हो बहुत बार, राइट? मैं डायरेक्टली क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। मान लो आप एक क्लाइंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, आप काम बहुत कर रहे हो, जो भी टिकट्स आ रहे हैं आप प्रॉपर टाइम पे हैंडल कर रहे हो, सब रिजॉल्व कर रहे हो। बट ड्यूरिंग द मीटिंग जो भी हम डेली बेसिस पे स्टैंड अप होता है ना, अगर वहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो, शोकेस नहीं कर रहे हो खुद पे, खुद का, तो वहाँ पे फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, राइट? तो वहाँ पे हमको स्पीकअप होना पड़ेगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है और ये मैं आगे करने वाला हूँ। शो खुद का काम शोकेस नहीं करोगे तो फिर वो वहाँ पे ना एक ड्रॉबैक होता है अपना, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो भी जो एक डिप्लोमेटिक वे होता है ना, वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम माई बेस, मतलब एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जो हम काम तो हम डेफिनेटली करते ही हैं, बट वो शोकेस भी करना जरूरी है एक बड़ी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं तो आपने देखा होगा कि माइक्रो मैनेजिंग बहुत चलता है आईटी इंडस्ट्री में। किसी को मैनेजर अच्छा मिल गया तो वेरी गुड, हो सकता है कुछ अलग मिल जाए तो अलग अलग, डिपेंड करता है पीपल कैसा है सामने वाला। तो हमें जो हमारा टास्क है वो शोकेस करना पड़ता है वहाँ पे, जो भी आप कर रहे हो। और सारा कुछ आईटी इंडस्ट्री का रूल है कि आप रिटर्न में रखोगे तो बहुत बार एस्केलेशन में हम बच जाएंगे, राइट? जो भी अभी राहुल भी काम कर रहे हैं ना, तो रिटर्न में जो भी हम रखते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं, तो वो हमें रिटर्न में रखना बहुत जरूरी होता है। दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द एनी एस्केलेशन और समथिंग लाइक दैट, और एनी डिबेट अगर हो गया कुछ। आपने किसी, लेट्स से आपको किसी ने वर्बली बोल दिया कि ये वाला टास्क कर दे, बट इन केस आपको पता ही नहीं कि वो टास्क करने के बाद, मतलब कुछ चेंजेस करने के बाद इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मान लो इनफैक्ट कि कुछ बिजनेस मेजर इम्पैक्ट हो गया वहाँ पे, राइट? आपने कुछ, अगर डेटाबेस की बात करें, अगर डेटाबेस पे कुछ गलत क्वेरी चला दी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर अगर वो टेबल ड्रॉप ऑफ हो गया या कुछ क्वेरी डिलीट हो गई, तो वो दैट की मेजर एस्केलेशन वहाँ पे। अगर वहाँ पे आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन है कि इन्होंने मुझे बताया था, मैंने टिकट रेज किया और टिकट के हिसाब से मैंने काम किया, सो वहाँ पे थोड़ा सा ये सर्वाइव हो जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या है, लोग आईटी इंडस्ट्री में बकरे ही ढूंढते हैं किसको काटना है। दिस इज फैक्ट। इसलिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ हमने डिप्लोमेटिक जो स्किल होती है ना, टाइम टू टाइम हमें खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है? ये
किसी बंदे के पास ऑटोमेटिकली नेचुरल स्किल होती है उसको चीज़ों को मोड़ मरोड़ के अच्छे से प्रेजेंट करना, ठीक है। किसी के पास नहीं होती है नेचुरली, तो हमें वो डिजाइन डेवलप करना पड़ेगा अंदर से। उसके लिए जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वहाँ पे। ये जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा डेफिनेटली यू विल लर्न दैट, जो भी डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम तो वो हम कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं। और आप भी जब आपको खुद का एक्सपीरियंस आएगा प्रोजेक्ट में हैंडल करते टाइम, सो डेफिनेटली यू विल लर्न दैट। टूल्स वाइज अगर आप देख रहे होते बहुत सारे टूल्स है, तो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर एंड लर्न दोज। द वन ओनली वन एक्सपेक्टेशन आई कैन आस्क यू, लाइक जो भी वीकेंड बेस पे हमारा टास्क होता है, मान लो हमने गिट स्टार्ट किया और उसके बाद जो भी मैं आपको लैब दूंगा या जो भी टास्क दूंगा, यू हैव टू कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। लास्ट 2-3 बैच से मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब लैब देते जाता हूँ, बाकी कैंडिडेट करते नहीं है, बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला या नहीं मिला। ठीक है, वो रीज़न आपके लिए आप तक ठीक है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, वंस बैच कंप्लीटेड कुछ टाइम जाता है, फिर हम वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर से स्टडी करना मूड नहीं होता, राइट। तो वो जैसे फ्लो चल रहा है उस फ्लो में अगर आप जाओगे ठीक से, तो आपका वो टच भी रहेगा वहाँ पे, आप भूलोगे नहीं। ये टूल्स ऐसे ही है, मतलब आप एक बार 6 महीने 1 साल काम नहीं करोगे ना, तो ब्रेन वॉश आउट हो जाता है। बहुत बार लिनक्स के कमांड भूल जाते हैं हम कि क्या करना है, वैसा वैसा जो भी है। तो टच बेस में रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप उसको नोट करके रखो, जो भी आपका हैबिट है, डायरी में करना है, नोटपैड में रखना है, या सिस्टम पे कहीं पे टेक्स्ट पैड में रखना है आपको। इट्स अप टोटली अप टू यू। आपके हिसाब से आप वहाँ पे लिख के रख सकते हो ताकि वो आगे चल के आपको हेल्प हो जाए। हेलो सर। ओके देन, बिफोर रैप अप, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, एनी डाउट्स? यस सर। हेलो। या सर जैसे कि अभी मैं बीसी कर रहा हूँ, बीसी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, 5th सेमेस्टर, तो मुझे कैसे पढ़ सीखना होगा एडब्ल्यूएस एंड जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, क्योंकि अभी मैं फ्रेशर हूँ इसमें, इसलिए मुझे बहुत सारी डाउट है सर। बीसीए फाइनल ईयर चल रहा है ना आपका, उसमें जॉब यस कैसे अप्लाई करना है? सर, क्योंकि कॉलेज में कंपनी आती नहीं है, आती भी तो सेल्स की आती है। ओके, वो बीसीए फाइनल ईयर में कौन सा चल रहा है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या से लास्ट वाला जो है? हाँ, 5th सेमेस्टर चल रहा है सर। टोटल कितना रहता है, 6 रहता है क्या? यस सर। ओके, तो जब आपका 6 स्टार्ट हो जाए ना, तो वहाँ पे जब आप ये नौकरी पे वगैरह प्रोफाइल अपडेट करते हो, तो वहाँ वैसा डाल देना, वहाँ पे अपीयर करके, जो नॉर्मली कंपनी कंसिडर करती है। बट उसके एपेयरिंग, पहले, हाँ हाँ बोलो। Naukri.com पे मैं पहले भी प्रोफाइल बना चुका हूँ एपेयरिंग में, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नहीं, अभी थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि थोड़ा फ्रेशर के लिए थोड़ा सा